These days, if immediately after sunset you gaze into the southern sky, that is towards the southerly direction, you find a big bright star which is being approached by something like a slightly dim star. So that is really the Jupiter and Saturn getting into conjunction with each other. यानी कि बृहस्पति गुरु जिन्हें माना जाता है हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, और शनि महाराज एक ही राशि में इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये मकर राशि में इकट्ठा हैं और इन दोनों बिग प्लैनेट्स का एक राशि में इकट्ठे होना happens approximately once in 30 years. For instance, it took place in 1961, then approximately it took place later in the 90s, and now in 2020 we find Jupiter and Saturn getting together in what is called as the makar rashi. अब 20 नवंबर 2020 से, that is already it has taken place, जो शनि महाराज थे वो विराजमान थे मकर राशि में, जो उनकी अपनी राशि है, अपने घर में ही विराजमान थे, और बृहस्पति महाराज धनु राशि से चल के, जो उनकी अपनी राशि थी, अब मकर राशि में आ गए हैं, जिनमें ये माना जाता है कि गुरु या बृहस्पति नीच अवस्था में रहते हैं। अब ये जो कॉन्स्टलेशन है तकरीबन 1 साल तक रहेगी, बीच में बकरी होके शायद वो वापस धनु राशि में आ जाएं, लेकिन फॉर 1 ईयर दिस इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर जुपिटर बीइंग डिबिलिटेटेड, नीच अवस्था में रहते हुए, और शनि महाराज मकर राशि में जो अपना घर है इसमें रहेंगे। और ये जो कॉन्स्टलेशन है दिस इज हैपनिंग आफ्टर अबाउट 30 ईयर्स। अब बृहस्पति महाराज नीच हों, शनि महाराज अपने घर में हों, तो व्हाट रियली हैपन्स? दिस इज अ क्लासिकल कॉन्स्टलेशन टू एक्सप्लेन द नीच भंग राजयोग, which we shall do during the course of this episode using the horoscope or the natal chart of none other than Barack Obama, the immediate former president of the United States of America. अब ये देखें, I would say that this constellation is absolutely a fantastic configuration, because Shani is a planet of action, a planet of strategy, whereas Guru is a planet, वो सबके गुरु हैं, planet of ethics, of gyan, of knowledge, and when these two are together, so I am sure that the results of this unique configuration in the natal charts of the kids who are going to be born after 20th of November this year, within next year, depending of course in which house, in which rashi they are going to be situated. They will be of course in the makar rashi, but which of the 12 houses, what's the lagan and so on, other things will determine. But one thing is very clear, that this creates a very, very potentially positive configuration for the kids who were conceived during the COVID pandemic. अब देखना ये है कि अगर गुरु नीच में हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इस कॉन्फ़िगरेशन में, और कैसे दिस इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ अ नीच भंग, और जब नीच भंग होता है वो महज न्यूट्रलाइज ही नहीं करता उसकी नेगेटिविटी को, इट कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज पॉजिटिविटी टू बृहस्पति महाराज, एंड देन द फैंटास्टिक रिजल्ट्स फॉलो फॉर द पर्सन इन हुज हॉरोस्कोप दे आर सो सिचुएटेड। लेट्स सी। देखिए, ये जो कुंडली आपके सामने है, ये ओबामा साहब, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी कुंडली है, अवेलेबल वाइडली इन द पब्लिक डोमेन, एंड दिस गोज बाय द हवाई आइलैंड टाइम ऑफ 1924 hours on the 4th of August 1961. Now if you see here, you find Saturn and Jupiter, शनि महाराज और बृहस्पति जी लगन में हैं मकर राशि में, और
जैसे आप जानते हैं, शनि का अपना घर, मकर राशि भी उनकी है, कुंभ राशि भी उनकी है। तो शनि महाराज बेशक अपने घर में हैं और उनके साथ गुरु या बृहस्पति। लेकिन गुरु या बृहस्पति जो है मकर राशि में, उन्हें नीच का माना जाता है। अब सवाल ये है कि ये अगर हम देखें इस कुंडली को, कि जिस शख्स का जुपिटर, बृहस्पति या गुरु नीच में हो, लगन में हो, शनि के साथ युक्त हों, वो किस तरह से टू सक्सेसिवली फ्रॉम नोवेयर कैन ही और ही कुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एंड यहीं वो जो कॉन्सेप्ट है नीच भंग राजयोग का है। In fact, it is very interesting that how Jupiter, in spite of being in a Neech rashi, has been able to give such fantastic results to President Obama. Now, Jupiter बेशक नीच माने जाते हैं मकर राशि में, लेकिन देर आर एक्सेप्शंस जिसे कहते हैं नीच भंग। और ये नीच भंग के जो रूल्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, these are applicable of course to all other planets, but जिस तरह का राजयोग बृहस्पति दिलाते हैं, it is ideal to explain it with reference to Jupiter or Guru. In this case, President Obama's horoscope, which clearly shows Jupiter in the Makar Rashi, in the Lagan of the former President of USA as debilitated, Neech में है। So, what are those rules? Rule number 1, जिस राशि में बृहस्पति महाराज विराजमान है, मकर राशि, उसका स्वामी शनि उनके साथ आ गया तो नीच भंग। This is the most potent antidote for Neech, where the planet, the ruling lord of the Rashi in which Jupiter as a Neech planet is situated right along with it. Neech is definitely Bhang. इसके साथ कहते हैं कि अगर शनि महाराज की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि भी पड़े जुपिटर पर, तब भी वो नीच भंग होता है। लेकिन जब शनि महाराज खुद साथ में विराजमान हो जाएं, उस तरह की जो पोटेंसी है नीच भंग की, वो दूसरी तरफ नहीं मिलती। इसके साथ आगे चलें, वो ये है कि आगे चलते हैं। अब बृहस्पति महाराज नीच तो मकर राशि में हैं, लेकिन किस राशि में उच्च के होते हैं? दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी मून, आप देख रहे हैं, इज सिचुएटेड इन द वृक राशि एंड इन द 5th हाउस। सो मून की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही, ना उनके साथ है, देयरफॉर दिस डज नॉट अप्लाई। ऑफ कोर्स इन दिस केस नीच तो भंग हो चुका, और नीच भंग होने का यही मतलब नहीं कि नेगेटिव पॉइंट्स हैव बीन कैंसल्ड। इट रियली मीन्स दैट द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ गुरु हैज बीन एंडोर्ड by virtue of the Neech Bhang. Then the third rule for the Neech Bhang, जिस घर में बृहस्पति महाराज स्थित हैं, लगन में है मकर राशि, और मकर राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? एंड दैट इज शुक्र या वीनस। वो यहाँ स्थित है मिथुन राशि में इन द 6th हाउस, उसकी भी दृष्टि नहीं पड़ रही। लिहाजा इट इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट एंड इररेलेवेंट, because here the most potent Neech Bhang Rajyog has been endowed by the very fact that the Lord of the Makar Rashi stands situated along with Jupiter, and therefore in the Mahadasha of Shani, as we see here in the Mahadasha of Shani, this really created a situation where the president could not but become the president of America 2012 ये देखिए से लेकर
2031 तक इनकी चलनी है, इसमें इनको सारे के सारे फल प्राप्त हुए। To conclude, therefore, once there is a Neech Bhang Rajyog, you obviously get fantastic results. But then scholars also try to underscore the fact that in spite of the Neech Bhang, for instance, there is another horoscope in which Brihaspati Maharaj is in Karak Rashi, which is an Uch Rashi and well placed and not afflicted with any negative planets or malefics. That of course would really have better results. And another thing which they say is that these positive results are confined and spread to your public domain. आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, power, prestige, public image. Whereas the benefits of the same may not percolate down to your private life. And that's why some of the astrological scholars have pointed out that अगर ओबामा साहब की पत्री में ये बृहस्पति महाराज नीच में थे, राज योग जो नीच भंग राजयोग बेशक बना, उन्हें प्रेसिडेंट 2 बार बनाया, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई. So that is of course a debatable issue, but I thought I would underscore and underline. So to conclude, irrespective of whether you believe in the karma theory or whether you believe in destiny or you believe in astrology, there is something very, very certain that your own actions also contribute. Our great scriptures, including Bhagavad Gita and Sahib Shri Guru Granth Ji Maharaj and Sahib Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, they have said in so many words that it is your karma that you do now that really contributes to what you are going to be henceforth. And therefore, while you may dabble in these sciences or pseudosciences, let us not forget that ultimately we ourselves are in the driver's seat and we have to use our buddhi and vivek to steer forward. Stay tuned and have a great day ahead.